Sanyara, Hmm. for me, the challenge was to convince people that I am the superstar or the rock star or have that vibe. Divaniyat ka, I want to tell you, the experience I've had with working with Harshvardhan has Hmm. been so amazing. स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था प्लेज वेज करना कॉलेजेस में, तो सबको पता था इसमें तो है एक्टिंग का कीड़ा है. आई थिंक क्लियरली रिमेंबर तुमसा नहीं देखा was the first film set that I went to. My first film was वो लम्हे. My first scene was a very difficult scene. It was a scene where I had to force myself onto Kangana. Obviously जब आपके पास काम नहीं आता है, you feel low. क्यों नहीं आ रहा है, वो हर इंसान के साथ होता है और हर एक्टर के साथ होता है और होना भी चाहिए. That I cry and I cry very easily. Of course I am an emotional person. I'm a very emotional person. देख मैं बोला हाँ मुमताज़ नहीं कर. In fact she tells me चल मैं तेरे साथ चलती हूँ इंटरव्यू में, चल थोड़ी पब्लिसिटी कर. शाद को पैसे मिल जाएंगे जब मिलने हैं यार, शाद को काम चाहिए. Mohit and me, like I said, I've been blessed that a director like him has believed in me over a span of 20 years. So, Shad, welcome to Moviefied. Thank you so much for having me. So, can I just know first that how is the feeling back to back hits, and how are you processing everything right now? Obviously, it feels so good to be a part of these films, and what makes it a little more special for Hmm. me is that one is directed by Mohit Suri and the other one's directed by Milab Zaveri. These two directors are the directors who have constantly shown faith in me as an actor. And I don't think it's just for one film, it's over a period of 20 years Hmm. consistently that they've believed in my talent. Right. And I feel, I'm happy that, I was able to, uh, what can I say? The faith that they instilled in me. Hmm. I'm happy that I could deliver. Yeah. And I'm very happy that the audiences have loved the film, Right. and they have Both liked my. Sayyara and Ek Diwani Yes, Ki yes. Diwaniyat. Yeah. And Both. they actually in Sayara, I think what happened is they spotted me. Hmm. एंड सयारा का पहले से ही था. मोहित ने मुझे कहा था कि दो ही सीन हैं, शायद 4-5 शॉट होंगे तेरे, but let's try and look different Right. from what you've looked before, and which we did. And like I said, I was spotted in Sayyara. Then लोगों को याद आया कि यार ये वही एक्टर है जिसने आवारापन की थी या आशिकी दी Correct. थी. So that really was like a recall for me, and Hmm. made me realize that people had really liked my work even in those films, to remember each character of those films. And then obviously अभी दीवानियत लगी, उसे भी इतना प्यार मिल Hmm. रहा है. मेरे कैरेक्टर को भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज यू वर्क to entertain people, you work for the audience, and then when you get the validation Hmm. from the audience, there's no better feeling Right. than that. And if I ask you, is validation as an actor is important? क्या लगता है आपको? क्या uh, बोलोगे आप? Absolutely important, Yeah. like I said, from the audience. Hmm. Anything creative, Hmm. अगर आप आर्टिस्ट भी हो और आपने एक पेंटिंग बनाई है, और अगर ऑडियंस को वो पेंटिंग अच्छी लगे, तो आपको और दैट्स हाउ यू फील गुड, दैट्स हाउ यू Right. फील कॉन्फिडेंट True. to work harder, to Hmm. make sure that if they have liked you, to make sure that they continue liking you, Hmm. and you continue to be sincere. Hmm. And yeah, so बहुत ज़रूरी है. एंड एवर इन लाइफ ऐसा कोई फेज आया जब काम नहीं मिल रहा हो और उस वक्त ऐसे लगता हो कि यार मतलब जब मैं काम कर रहा था, जब काम मिल रहा था, सो दैट मोमेंट वाज डिफरेंट, वो टाइम अलग था, और अब जब काम नहीं मिल रहा है तो उस वक्त क्या फीलिंग होती थी? Obviously, every actor wants to be a working actor. No actor wants to be sitting at home. But there are a lot of things that are not in your hands, जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी सेड, जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. आपके हाथ में जो है आप वही कर सकते हैं. तो जो भी जब भी आपको मिले, चाहे वो एक ओवर मिले, आप ट्राई करो वो एक ओवर अच्छा बोल करो, ताकि आपको दूसरा ओवर मिल सके. आपको अगर एक बॉल मिलता है, ट्राई एंड, जैसे रिंकू सिंह लास्ट बॉल पे चौका मार दिया, मौका आपको जब भी मिले, आप अपनी कोशिश कीजिए कि आप उसे जितना हो सके, यू ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट.
And the rest, I think a lot depends on God and on destiny. बाकी तो एज एन एक्टर आप वही कर सकते हैं जो आपके सामने काम आए, आप उसे अच्छी तरह करें. एंड ऑब्वियसली जब आपके पास काम नहीं आता है, यू फील लो, यू फील क्यों नहीं आ रहा है. वो हर इंसान के साथ होता है, हर एक्टर के साथ होता है, और होना भी चाहिए. You should feel bad. It's Mm. okay. You should feel sad. You As could a you human, as a that human is being, very, yeah. you should cry. It's okay. These emotions are fine to come to you. Zindagi bhar, life is not कि आप you're going to be happy all the time or you're going to get everything what you want. इतनी सिंपल लाइफ होती नहीं है. तो ये जो दूसरा साइड ऑफ लाइफ है, इसे भी एम्ब्रेस करो, इसे भी एक्सेप्ट करो, बट गेट ओवर इट. Hmm. उसमें don't keep staying in that state of mind. It's not wrong to be in that state of mind when you're not getting work, but don't just Correct. get over it. रो लो, चार लोगों से बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, बट उसे अपने सिस्टम से निकाल दो और फिर आगे बढ़ो. तो शाद की लाइफ में ये कितनी बार हुआ है कि जब वो एक्चुअल में रोए हैं? बहुत बार हुआ है कि कई हम्म. बार होता है that I cry and I cry very easily. हम्म. Of course I cry on my own. You are an emotional Yeah, I'm person. an emotional person. I'm a very emotional person, and I I am the way I am, and I It express myself, and everyone around me knows me. They know how emotional I am. So yeah. when was the last time when you cried for not getting work, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई फिल्म मिली हो और वो कन्वर्ट नहीं हो पाया हो? Honestly, ऐसा कोई particular कोई इंस्टेंट या कोई इवेंट के वजह से मैं नहीं रोया हूँ. कभी कभी व्हाट हैपेंस के यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, यू आर गोइंग थ्रू अ लो फेज, और सडनली वन डे इट हिट्स यू कि अरे यार ये क्या हो रहा है, और तभी यार ठीक है तो रो लो, फील बैड, बट देन टेल योर सेल्फ कि ठीक है यार, सो व्हाट, गेट अप एंड फाइट अगेन, टुमारो इज अ न्यू डे. कुछ ना कुछ, you have to have the faith that something will work out. You have to have the faith. बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद ही एक चीज़ है जो हम सबके पास है. तो उसे पकड़ के रखो और आगे बढ़ो और अपने आप में फेथ रखो. एंड इफ़ यू हैव अ फ्यू पीपल अराउंड यू हु बिलीव इन यू, दैट्स ऑल यू नीड. एंड शाद रंधावा की लाइफ में ये फेथ और ये पॉजिटिविटी जो है वो कहाँ से आती है? ये the way I've been brought up, my parents, they've been fighters. All, चाहे मेरे father हो, मेरे ताया जी हो, my mom, my aunt, they've all started from very humble backgrounds. They are not from any big family. My father and Taya ji were farmers in Punjab, and they worked hard. They worked they were self-made, and they reached where they reached in life. My Masi also, Mumtaz, she was a background dancer. फिर वो कभी एक सीन करती थी, कभी दो सीन. फिर इनकी मैं इनकी जर्नी देख चुका हूँ, जानता हूँ कैसे होता है. और हमारी फैमिली में यही था कि बेटा तुमको जो करना है करो, वी आर देयर फॉर यू, वी आर इमोशनली एब्सोल्युटली बिहाइंड यू, बट योर जर्नी इज़ योर जर्नी. और जो मैंने भी कोशिश की है करने की, मैं अपनी जर्नी यू नो आई हैव टेकन ऑफ ऑन माई ओन जर्नी, एंड that's what I'm trying to do, and not compare my journey to anybody else's journey. That is also very important because everybody's got their own journey, and I'm very happy and proud of my journey. And yes, hopefully now in the future, I want to continue working. I want to do a lot of good work. I want to be a actor who's on set every day, and I hope and pray for that every time. सो शाद, यू कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, Yeah. ओके, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है ये कि Yeah. आपका कनेक्शन. Yeah. सो बट व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम एन Hmm. एक्टर, सो was there a pressure from the family कि you have to follow this, या फिर you बिल्कुल. wanted to pursue this career? I wanted to. It was all, my decision, to get into this line, to do the movies I did, whatever it is, Hmm. whatever this small little journey I have is my own journey. Hmm. It's a very self-made journey, and obviously, um,
I had my parents to Hmm. talk to. I have these, people around who have been there to talk to. And whenever I've been low, and I have, of course, spoken to them. And, ye, this line is such, or that you have to do it on your by yourself. There's no other way. आपके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता. आपको ही खुद के लिए ही कुछ करना है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप करें और इंस्टेंटली हो जाए. हर इंसान की जर्नी अलग होती है. सो आई थिंक यू हैव टू just believe in yourself and be consistent. I think sometimes being hardworking and consistent is better than being talented. जब डिसाइड किया था कि एक्टर बनना है तो उस वक्त सबसे पहले किससे बात की थी घर में? और मैंने मेरी माँ से कहा था. हम्म। बट एक्चुअली मेरे को लगता है सबको पता ही था, हम्म। बिकॉज मैं स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था हम्म। प्लेस वेस करना कॉलेजेस में. तो सबको पता था इसमें तो है, एक्टिंग का कीड़ा है. हाँ, सिर्फ एक चीज़ उन्होंने कहा था कि एजुकेट योर सेल्फ. हम्म। अपना एक एजुकेशन कर लेना अच्छे से, और उसके बाद यू कैन परस्यू एंड डू वट एवर यू वॉन्ट. एंड दे हैड ऑल्सो टोल्ड मी कि बेटा आसान नहीं है. यू नो हम्म। पता था, but they were there for me, they supported me. और अभी I went on. And what was your aunt Mumtaz's like piece of advice for you when you decided to enter this industry? She told me nothing replaces hard work. She said, just keep working hard and just keep at it. Just keep at it and don't give up. That's what I'm trying to do. Mm-mm. Okay, and what a fabulous dancer and actor she Absolutely. is. How is she doing, by the Superstar. way? How is She's she? doing extremely fine. In fact, she's very happy Hmm. for me because of Sayara and Diwaniyat. Right. In fact, she tells me, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ इंटरव्यू में, चल थोड़ी पब्लिसिटी कर, कैसा है तू, बाहर नहीं निकलता. I said, हाँ भी. She's very happy for me, very proud. She is as happy as she can be. And touch wood, she's doing extremely Hmm. well. She's looking better than she has ever looked. She's very healthy. She's very happy, and she has a wonderful family, and it's So all you good. guys don't now tell her that you should like still come in films and Nahi, do nahi. something. Nahi, now she should enjoy her life. Hmm. She's worked very hard all her life. Right. Now it's time to enjoy her children, her grandchildren, and yeah. So शायद पब्लिसिटी के लिए उनको लेके आना चाहिए था, वो एक अलग ही फिर नहीं, माहौल वो कह होता। रही, वो है बॉम्बे में, मुझे हाँ कहती जी। है कि तू चल चल जाते हैं ऐसे मुमताज आंटी ये सब. So yeah, she's very sweet, yeah, very sweet, and Yeah. she's always been very, very supportive of me. Hmm. और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहती है, मेरे नुक्स निकालते रहती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि Hmm. कुछ भी मेरा काम नहीं कि ये सब ठीक था लेकिन तेरे बाल में तूने बहुत देख. मैं बोला हाँ मुमताज़ आंटी का वहाँ ठीक था, लेकिन तूने वहाँ पे ना तूने जल्दी छोड़ दिया. एक्सप्रेशन, दी स्मॉल थिंग्स that she tells me. I really listen to her, and Hmm. obviously man, she's been there, she knows so much. She तो has watched all your films मोस्ट recent ऑफ माई times? फिल्म्स, और जो भी देखती हैं वो हमेशा मुझे फ़ोन करके कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर Hmm. देती है, Hmm. जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. Right. So, Okay. And Shad, do you remember your first time when you visited your first film set? What was that day like? And first shot? oh God. I think the first film set I went to was Vishesh Films. I think तुमसा नहीं देखा बन रही थी. Hmm. Imran Hashmi and Dia Mirza were in it. अनुराग सर was directing that film. और तभी मैं जाता था वहाँ पे स्ट्रगल करने, भट्ट साहब को मिलने. तो कई बार जब उनके ऑफिस जाता था, वो नहीं रहते थे, तो पूछता था कहाँ हैं, तो बताते थे कि अभी वहाँ शूटिंग चल रही है. आई थिंक क्लियरली रिमेंबर तुमसा नहीं देखा was the first film set that I went to, that I remember. जहाँ पर मैं भट्ट साहब को मिला. वहाँ पर मोहित भी थे, उनको Hmm. भी मिला. फिर वैसे ही मिलता गया. एंड so I think that was the Okay. And what about your first films? my first film was वो लम्हे. My first scene was a very difficult scene.
because my first film I was playing a negative character, and it was a scene where I had to force myself onto Kangana. So I was made to. I was a very lucky. I had Bhatt साहब there, मोहित सूरी. तो उन्होंने आके मुझे समझाया, बोले पता है, it's not an easy scene. It's your film. It's your first day, but don't treat it like a villain. क्योंकि हर विलन की एक स्टोरी होती है, हर विलन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो ये सोच के हाउ विल यू जस्टिफाई दिस जो तू ये करने जा रहा है, बिकॉज जब तक तू खुद कन्विंस नहीं है तू कर नहीं पाएगा. विच दे वर सो राइट अबाउट दैट. जब भी आप सीन कोई कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव सीन भी हो, यू हैव टू बिलीव इट दैट व्हाट यू आर डूइंग इज द राइट थिंग टू डू. बिकॉज कोई भी इंसान जो गलत करता है उसे कभी ऐसे नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है. उसे तो लगता है कि वो सही कर रहा है, नहीं तो वो करता क्यों. सो यू नो दीज स्मॉल थिंग्स, एंड देन टच वुड जो उन्होंने कहा, फिर भट्ट साहब ने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देख कर बोला कि यू गॉट दिस, यू गुड, एंड जस्ट गो आउट देयर एंड गिव योर शॉट. I gave my shot. Luckily, they liked the shot. That is a beautiful memory I have. It was my first shot in the film, and they had really liked it. So I was very happy. And like I can say, I've been very lucky to have these people to guide me, and got to learn a lot from Vishesh Films. It was like a learning school for all of us. So a lot of things that we imbibed as actors, as human beings, have got, I think, have has got to do a lot with that as well. Still in touch with Kangana? I'm not in touch with Kangana, but Chabibi, obviously we meet. I've had a wonderful working experience with her. I know it's been 20 years, but we all knew while we were shooting for the film only that she's going to be a superstar because she was super talented. And as a co-actor, she was extremely kind because it was her second film and was my first film. So she was very kind to me and very helpful and very friendly because especially वो first day जो मेरा scene था, मैं उनको बार बार Right. मैं बोल रहा हूँ sorry, मैं sorry, तो बोलती है शायद just relax, this is a scene, you just be comfortable. बोला मैं यहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है ना. She's like, yeah, just calm down. So she was very sweet and very helpful and very kind to me. I remember that. And after that, actually, I've not been in touch with her. She's gotten busy with her life. And, yeah. Okay. And do you also remember any of your roles when you look back and you think, यार वो बहुत challenging role था मेरे लिए? Which character? Oh, there have been a few. Like, to be honest, Sanyara, ऐसे लगता है कि, है नहीं कुछ because, it's not a full-fledged role or as they call it, it's just a cameo. But for me, the challenge was to convince people that I am the superstar, the rock star, or have that vibe. To be a little flamboyant, to have that body language, Right. uh, to have that look, to transform myself. I think that was pretty challenging for me. I would like to say even Divaniyat because Divaniyat was very intense, and the shooting schedule and the time we just had around 30-35 days to shoot the film. And it was a very intense film, very, yeah, so we had to be on the A game. सबको पता था कि we don't have enough time. Director knew, cameraman knew, actors knew we don't have too many takes to play with. We don't have too much time. There was a different kind of a pressure to deliver. Yeah, but touch wood, it all turned out well. So now talking about your roles, your characters, जब भी एक प्रोजेक्ट शाद के पास आता है, व्हाट्स योर दैट क्राइटेरिया जो यू थिंक कि हाँ इसमें मैं फिट बैठता हूँ, आई थिंक आई नीड टू डू दिस. सो हाउ डू यू चूज योर प्रोजेक्ट्स? Honestly, very instinctively. I mean, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे वो एक सीन भी हो, बट अगर मुझे लगता है कि आई कैन डू समथिंग और contribute something to the राइट. film and to the character, yeah, that's about it. That's all I think of. It doesn't really, to be honest, I know, never ever thought about मेरे कितने सीन हैं या मेरे कितने लाइन हैं.
ऐसा कभी सोचा ही नहीं, यही सोचा कि ये अच्छा ये मिल रहा है, इसको कैसे करूँगा। हाँ ये मैं कर सक जैसे मलंग में वो एक सीन था विच बिटवीन आदि एंड मी, वो सिर्फ एक सीन था, बट आई रियली लाइक द वे द हम्म। सीन वाज, द वे इट वाज रिटन and where it came in the film. So, you know, these things are very instinctive. I don't know. एंड कोई एक और ऐसी फिल्म जो बिना सुने हुए उसकी स्टोरी, या बस कॉल आ गया और बोला गया कि शायद वी वांट यू इन दिस फिल्म एंड यू सेड यस। so yeah, these two films, Sanyara and Diwaniyat, both. Mohit called me up. He said, "I want you to do this part." I said, "Of course." I mean, but then obviously I had to go through the casting process as well as there was Shanu Sharma. She is the casting director, करेक्ट। YRF. So of course went there. We had a few workshops, but that part, where Mohit told me, he said, it's very different from what you've done, and I completely agreed with him. And then there was Diwaniyat. On paper, to be honest, it was a part that didn't have too much meat, but Milap came to me and he said, I want you in this. So, देखो अभी जब when your directors who believe in you come and tell you that, then you don't have to listen to the script. I feel then you just go with it. They are the people who have always stood by you. They are the people who have believed in you. अब मैं उनसे क्या सुनूं? मैं उनसे क्या पूछूं? क्या मतलब तो yes, and दीवानियत का I want to tell you the experience I've had with working with Harshvardhan has been so amazing. पहले दिन से ही सच अ टीम प्लेयर, और बहुत ही फोकस्ड है वो काम को लेकर। और पहले दिन ही उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये जो विक्रमादित्य और सावंत की जो केमिस्ट्री ना भाई हम लोग करेंगे, मेरे को पता है इतना स्क्रिप्ट में नहीं है, बट वील डेवलप इट. So if you even see the film very closely, every time he's in a scene or in a, he's talking to someone, he's glancing at my character, giving him that importance. These small nuances, add a lot. फिर एक दिन मैं मेकअप वैन में बैठा था, तो मेकअप दादा ने बोला सर आए हुए हैं बाहर. मैं बोला कौन सर? मैं जाके देखता हूँ हर्ष भाई खड़े हैं स्क्रिप्ट लेकर. बोले भाई वो लाइंस याद करनी है आपको. ऐसे नहीं भाई मैंने पढ़ा है, मेरी लाइंस नहीं है, आप चलो रिहर्स करते हैं इसे. नहीं 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 भाई, वो पहले की 5 लाइनें ना मैं नहीं बोलने वाला, वो आप बोलोगी. मैंने बोला भाई क्यों ऐसे? तो कहता है कि भाई वो मेरा कैरेक्टर ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा इन द फिल्म, सो सावंत शुड से दीज लाइंस. I was like, okay, actually that makes sense. And then I said, did you? He said, no, no, I've spoken to Milap sir also, even he agrees. एक ये इंस्टेंट था. फिर मुझे एज अ एक्टर वाइल डूइंग दिस फिल्म मुझे लगा कि एक पॉइंट होना चाहिए फिल्म में, थोड़ा बहुत जस्टिफाई करने के लिए. हर्ष वॉज द फर्स्ट वन हु सेड कि यू एब्सोल्युटली राइट. फिर उन्होंने मिलाप सर को बोला, हाउ वी सैट डाउन एंड ही डेवलप्ड इट अलॉन्ग विद अस for the betterment of the film, राइट। which is so amazing and so refreshing that that's all, he was thinking about how to better the film, how to make this film the best film we can make. And I think कहीं ना कहीं जब आपकी नियत ऐसी हो वो रेजोनेट हो जाती है. एंड नाउ टेल मी अबाउट योर एंड मोहित सूरीज कनेक्शन। तेरा मेरा रिश्ता पुराना. Mohit and me have, yeah, like I said, I've been blessed that a director like him has believed in me over a span of 20 years. He's the director who gave me my first break in Volame, and he continuously believed in me as an actor, and I'm very grateful to him for that. और काम करते 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 ऑब्वियसली हम दोस्त भी बन गए. और उन्होंने आई थिंक काफ़ी फिल्में बनाई हैं, पता नहीं 14-15 कितने फिल्में बनाई हैं. ऑब्वियसली मैं हर फिल्म का पार्ट नहीं रहा हूँ. आई हैव जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ few of his films. Yes, I've been lucky that the films I've been a part of have gone on to become really films that have gone and connected with the audience. And I've been lucky that uh, along with connecting with the films, they also connected with the my characters.
और हमारा बॉन्ड ऐसा है कि जब वो फिल्म लिखते हैं उन्हें लगता है कि अगर कोई पार्ट है जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ तो ही डेफिनेटली टेल्स मी एंड देयर इज लाइक आई सेड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं थोड़ी उनको पूछने वाला हूँ क्या पार्ट है, क्यों दे रहा है, क्या फिल्म है, इट्स मोहित। बट एट द सेम टाइम जब वो लिखते हैं उन्हें लगता है कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इट्स फाइन, वी आर स्टिल फ्रेंड्स and we'll always be friends. Hmm. That has got nothing to do with the kind of whether we work with each other or not. Professionally, that बिल्कुल नहीं, much. वो Yeah, इतने साल वो कभी ऐसा रहा ही नहीं है। right. एंड टॉकिंग अबाउट कमर्शियल साइड ऑफ बॉलीवुड, अगर मैं कमर्शियल्स की एज एन एक्टर बात करूँ तो व्हाट विल यू से किस तरह से जो एक्टर्स को कमर्शियल्स मिलते हैं ना, शायद एज एन एक्टर कैसे आप बताओगे कि पर फिल्म हाउ द लाइक वी हियर बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि इस एक्टर ने इतना डिमांड किया, उसने इतना डिमांड किया, सो नाउ कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट दैट? See, I honestly, I'm not in that position to, comment on the commercials of any actor. But one thing I completely know or understand, which is even common sense, that we all are driven by the market राइट. and the market sources. Which actor is in demand, which actor that people want to buy a ticket for, is the actor who you're giving the prize to. I'm so sure the producers, the financiers, the distributors have that sorted out. They understand business more than any one of us. तो अगर कोई एक्टर एक प्राइस डिमांड कर रहा है और वो प्राइस अगर वो उस एक्टर को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उस एक्टर से वो रिकवरी भी हो रही है। और जब वो रिकवरी होना बंद हो जाएगी तब वो एक्टर को प्राइस देना कम कर देंगे। तो I don't know. I don't think of it that way. ये सब I think these are just normal things, and ये सब noise I think is there, but people who are a part of this or part of the creative process, I don't think they get so much into all this. Everybody wants to make a good film. Everybody wants to make a film that reaches out to the maximum number of an audience, and everyone has the best attempt at doing that. Yeah, so that's about it. So I feel any actor that's getting paid whatever he's getting paid, good for him, because somewhere down the line he's worked hard for it and deserves it. And who, according to you, in the current lot, if I ask, is you think is 100 crore actor who can get the audience in theaters? So, according to you, Right now, all of them. They also Karthik. Karthik has been doing it. Karthik Aryan has been doing it consistently. Varun Dhawan, Siddharth Malhotra, Aditya Roy Kapoor, all these guys, I mean, they have all delivered. Now, हर बार हर actor की film hit नहीं हो सकती यार. I mean, it's not, everyone attempts to make a good film and they all do probably, but there are so many variables for a film to become successful. But it's okay, but that doesn't mean, they're going to come up with another hit film, a bigger hit film. And obviously, let's not even get where the seniors are, like Shah Rukh sir, Salman sir, Amir sir, Ajay sir, Akshay sir, they're superstars. So, yeah. okay, and शाद को अब अच्छे पैसे मिलते हैं? शाद को पैसे मिल जाएंगे जब मिलने हैं यार। शाद को काम चाहिए, जब काम आएगा पैसे आ जाएंगे। I mean, yeah, I've never really ever thought about that. I've always just thought about wanting to work more and just wanting more work. Again, not because I'm so great, because I understand the more you work, when you work, the more you work, money will come. Money won't go Right, anywhere. right. Uh, काम होगा, नाम होगा, तो पैसे आ जाएंगे। So, still, Shad, उतना ही struggle you think you have to do right now to get work? ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो कांस्टेंट ही है ना, बिकॉज क्या है, सब अपनी फिल्में बना रहे हैं, सब दे ऑल वेरी बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड, इन देयर ओन लाइफ, मेकिंग अ फिल्म। तो और इतने एक्टर्स हैं आज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, प्लेटफॉर्म्स भी इतने हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू थिंक अबाउट यू ना। तो Right. आपको ही जाके आगे से बोलना पड़ेगा कि सर अगर आपके पास कुछ है मेरे लायक, इफ़ यू थिंक आई फिट इन, then please think of me, because it is a little, you a little, I don't know, not real to think that अरे यार ये मेरे बारे में सोच लेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सोचना है, but
it's difficult ना ध्यान में आना. So you have to keep at it and keep going and telling them as many people that if you're making something, give me work. And there's nothing wrong in that. So how frequently you do I'm this getting better at practice it. and Actually, this is what I've yeah. learned over a period Hmm. of time and not because of anything else. I was a very shy person and I live in my own little Hmm. world. But I realized that, besides acting and besides, trying to get better at your skill, this is a different part of the Hmm. job profile which you have to do, which is also very important. एंड इट्स ओके. मुझे लगता था यार इतने बार इनको फ़ोन कर दूंगा इनको बुरा लगेगा यार. अच्छा 2 बार 3 बार कर दिया अभी चौथी बार कैसे करूं. दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. बट आई थिंक वो सब बचपना है. किसी को कोई बुरा नहीं लगता. आई थिंक everyone knows you're here to work. Hmm. It's no big secret why I'm calling a director. There's no secret why I'm calling a producer because I want to work with them. And there's no harm. And if they feel that I fit a part, Hmm. I'm so sure they would want to cast me. ओके. एंड ऑन दैट नोट ऑल्सो इफ आई आस्क यू कि कौन से ऐसी फिल्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉलो अप करना पड़ा हो या आपने सुना हो कि ये फिल्म आ रही है और आपने उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से फॉलो अप किया हो एंड रिक्वेस्ट किया हो दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Um, आई थिंक ऑल माई फिल्म. मुंबई सागा एक हम्म. फिल्म थी हम्म. जो संजय गुप्ता जी हम्म. बना रहे थे. एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म्स बिकॉज आई लव द वे ही शूट्स हिज फिल्म्स, द वे ही प्रेजेंट्स द हीरोज. हम्म. उनका एक अलग स्टाइल है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम. उनसे बोलता था सर सर इस बार. तो उन्होंने कहा था इस बार हाँ करता हूँ. फिर मुंबई सागा का कुछ ensemble का एक कुछ पोस्टर या फोटो आई. हम्म. मैंने उनको वो फोटो भेजी. मैं बोला सर मैं नहीं हूँ इसमें. सो इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. 2 दिन के बाद उनकी ऑफिस से फ़ोन आया एंड ही सेड देख शायद ये पार्ट है तू करेगा. इसे हाँ सर करूँगा मैं हम्म. करूँगा. आई सेड हाँ ज़रूर करूँगा. सो आई थिंक मुंबई सागा वाज वन ऑफ हम्म. दोज फिल्म्स. वाह. स्वीट. ओके. मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिखा रही हूँ. ओके. एंड नाउ यू हैव टू टेल मी memories related to these photos. या Okay. So I think I will go with this. This is called Picture Story. And here you go. ओह यस. दैट इज Mohit, Adi, and me celebrating Right. the success of Sanyara together. Ah, okay. How is Aditya Roy Kapoor and your bond? Like I think he's like a brother I never had, Hmm. and I always tell him that we have gotten along with each other from day one, from Ashiki, and Touchwood, our friendship has only grown over a period of time. He's always there for me for the smallest of things, and I would like to believe I'm also there for him always. Yeah, that's about it. And he is again a superb actor. A Just, brilliant actor. yeah. He's a brilliant actor, and I tell him he should work more. That's what we all keep telling him. Mohit Hmm. also tells him, Adi, work, take up more projects, do Projects. more work because he's such a good actor, and everybody wants to see Hmm. so much more of him. But Hmm. I think he's in the process of doing that, and he will do that now. Hmm. Okay. Let's move on to this. अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. That's so true. That is so true. And again, Hmm. very dear friend of mine who is so happy. Hmm. They say कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो दोस्त आ जाते हैं. ज़रूर आते हैं. बट मेरा एक मानना है कि जो दोस्त आपकी खुशी में आप जितना खुश है ना वो दोस्त को कभी मत जाने देना. Because very few people are really happy for you in your happiness. Very few. So those kind of friends, if you have, you should never let them go. Imran is one such friend. Aditya is another friend. I mean, since we are just talking about Hmm. them. In fact, I would like to believe all my friends that are close to me. He called me up. He said, क्या कर रहा है घर पे क्यों बैठा तेरी पिक्चर चली है चल बाहर चलते हैं. So that's the kind of a heart he has. And I was when मैंने पहली बार वो रील देखी थी
ओ गॉड, पहले तो राघव के लिए थोड़ा 2 Oh, मिनट के लिए, yes. भाई, what a He's on performance. another level. What a Yeah. performance, you know. And when I saw that reel, I was like, wow, I didn't know whether I was blown away with his performance or, you know, blown away with the idea of how they thought of that. And I believe it was so organic because that is a Imran Hashmi fan emotion, you know, कि अक्खा Bollywood एक तरह, and the way he delivered, Raghav delivered. And so when I saw the reel, I sent it immediately. I think तभी तभी रिलीज हुआ था शो और रील तभी बनी थी. Right. और मैंने मोहित और इमरान दोनों को भेजा. मैंने बोला था भाई ये वायरल है और ये टू गुड है. तो मोहित said, yeah man, this is brilliant, and it's so true and it resonates with him, yeah, and he deserves it for the kind Right. of work he's done. So this photo was of when exactly? I think दीवानियत की दो या 3 दिन के बाद, अच्छा, तीन when he called you when he called to, me, he called me. yeah. He said तू क्या कर रहा है, हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, तू आ जा, Hmm. and let's celebrate this. Ah, sweet. Okay. And now this. Yes, this is Bhau. Bhau, this man, my God, he's so Harshvardhan. hardworking. Yeah. आप ये आदमी के साथ रह लो ना, आपको नहीं भी करना है, मेहनत ये करा के रहेगा. आई रिमेम्बर, जैसे मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, 30-35 दिन में हमें फिल्म शूट करनी थी, बट वर्कआउट भी करना था. अब कब वर्कआउट करें यार, 9 बजे वापस आ रहे हैं. तो भाई बोलते थे, भाई अभी 10 बजे मिले. He is very disciplined. मैं बोला, Yeah. भाई पूरा दिन आज यार, आज तो एक्शन भी किया. ठीक है भाई, आप चले जाओ, मैं कर लेता हूँ. देन आई एम लाइक, नहीं यार, देन आई वुड फील बैड. बट हर बार मैं नहीं जा पाया. बट जब भी वक्त मिला, आई वी वर्कड आउट टुगेदर, एंड अमेजिंग. Hmm. And how do you deal with the ups and downs being part of the film industry, Shad? It's very difficult, I think, to deal with it. I think the best thing to do is to be in the present because देखो, वो चाहे वो अच्छा ऊपर नीचे तो होने ही वाला है, चाहे वो ये फिल्म इंडस्ट्री हो या लाइफ हो. इट्स अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू हैपन. It's just that when the downs happen, fasten your seatbelt, and like how it happens in a roller coaster, just believe that ये जो नीचे जा रहा है, ये कभी ना कभी ऊपर आ जाएगा. And just have the faith, have the belief, and that's about it. And leave the rest to God and continue working uh, in any form. That's what I would like to tell people, कि काम करते रहो, जो मिले. काम नहीं भी मिलता है तो खुद पे करते रहो. खुद पे करते कुछ नहीं मिलता ना तो कुछ कर लो, कुछ सीख लो. Something, just keep working. And before closing, tell me, what's that one thing which you wish people would have known better for you, जो आपकी फिल्में देखने से उनको समझ में उतनी नहीं आती हूँ, about शाद रंधावा? Like I said, I'm very shy. I don't easily, it's not very easy for me to talk about myself like that. Only a very few, very close people, they know about me, my life, my struggles. I genuinely don't like to talk about what I've been through, what I've not been through, because when you look around, people have been through a lot more. So there's no point thinking about आपके साथ क्या अच्छा नहीं हुआ. ये सोचो कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, True. और वैसे ही ज़िंदगी जीना चाहिए. आई फील देयर इज नो अदर वे, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज. अच्छा बुरा होगा, बट थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू एंड कीप दैट विद इन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. वेदर इट्स द लव यू गेट, थिंक जो आपको प्यार देता है वो प्यार ले लो, जो आपसे प्यार नहीं करता उसे नमस्ते बोल दो और आगे बढ़ो. दैट्स इट. So, Shad, what's next? Masti 4 is next. I'm also starting to shoot a film that I really don't want to talk about now in November. It's a film that's, again, something that I could only dream of at one point. But I will talk about it when the time comes. And there's another one. But all in good time. Abhi Right. filhal next Masti 4 hai. Okay. When we are talking about मस्ती 4, काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए मस्ती 4 को लेके. जब पोस्टर रिलीज हुआ, जब वो लेग्स को, फीमेल लेग्स को नहीं, वो लेकर तो के आने वो ही पॉइंट थे, वो आउट तो किया गया. हमें एग्जैक्टली. जी वो तो. So, Yeah, so that honestly, everybody knows. The whole team knows
They're very intelligent people working on the film, you know, the actors. राइट। Uh, तो सबको पता है कि ये क्या जॉनर है, ये अडल्ट कॉमेडी है. So I think that's how people should look at it and judge it accordingly. It's like American Pie जैसा है, adult comedy वहाँ पे है. तो now you will not look at an American Pie and try to compare it with Godfather, will you? It's a totally different genre. It's an adult comedy. Yes, it might not appeal to people's sensibilities, and I completely understand and respect that. That you know, some people don't want to see it, so they should stay away from it. But people, if there is an audience for it, we have attempted to find that audience and to entertain that audience, by making them laugh. That is the only intention we have. कि हम हमें जाके देखे और हंसे and they have a good time and they go back home laughing and उनका mood थोड़ा change हो दुनिया भर के stress से. That is the attempt. And let's see whether we are we will be successful in that or not. But one thing for sure is that the intention of everybody on that film is to entertain our audience and to make them laugh. And I hope we manage that. And God forbid we don't. Please forgive us. We will try harder next time. We are only here trying to entertain everybody. That's about it. Nothing more. Thank you so much. Thank you so Thank much. you so much. It was lovely chatting with you, Shad. And Same. all the best for all your future projects. Thank you so much. So Thank nice.